Assalamu alaikum. I hope you are all living a happy life with your loved ones. My name is Khawaja Muhammad Idris, and I am a student in the Department of Education at the University of Azad Kashmir. The purpose of making this video today is to discuss Jean-William Piaget, a very famous Swiss psychologist renowned for his work on child development. In fact, his fame largely stems from the theories he proposed on child development. Although Jean Piaget conducted many experiments and contributed numerous theories on child development, today we will focus on his most famous theory, Piaget's theory of cognitive development. In this theory, he divided a child's cognitive development into different stages. 1. Sensorimotor stage. 2. Pre-operational stage. 3. Concrete. Operational stage. 4. Formal operational stage. The short and concise summary of these stages is given below. Sensorimotor learns through senses and actions. Pre-operational, egocentric thinking, pretend play. Concrete operational, logical but needs hands-on. Formal operational, abstract and critical thinking. Through these 4 stages, Piaget explains how a child's cognitive development progresses, what they can understand, learn, and process at each phase. In the field of education, it is extremely important for a teacher to understand their students' mental behavior and social development. We're testing Piaget's theory by observing if an 8-year-old demonstrates the key traits of the concrete operational stage. Using simple tasks, we'll assess the child's ability to think logically using concrete objects, understand conservation, classify and seriate items. Goal: to see if today's children develop these cognitive skills at the ages Piaget suggested. Let's move toward the test. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैदर अली है। आपके बाबा का क्या नाम है? मेरे बाबा का नाम ख्वाजा तौसीफ है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं कोशिश स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज 9 ईयर ओल्ड है। अच्छा ठीक है, अभी हम एक गेम खेलेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ? जी। अच्छा, अब हम गेम खेलना स्टार्ट करें। जी। आपके सामने कैंडीज पड़ी हुई हैं। मैंने इसके ग्रुप्स बनाने थे जो इनमें से सेम है, तो आप मेरी मदद कर सकते हो इनके ग्रुप्स बनाने में? कैसे आप करोगे? मैं करूँगा, जो बबली है ना उनको एक साइड पे रखूँगा और जो जिस कलर की टॉफीज हैं उनको उन साइड पे रखूँगा। अच्छा, तो आप करके दिखाओ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आपने सबसे पहले कौन सी टॉफी उठाई है और उसको उस ग्रुप में क्यों रखा है? मैंने सबसे पहले ये वाली टॉफी उठाई है। मैंने इसको उसके ग्रुप में क्यों इसलिए रखा है क्योंकि उसका कलर भी सेम था और आपने कहा था कि सेम कलर को सेम कलर के साथ रखें। अच्छा, अभी हम एक और गेम खेलेंगे। जी। उसमें आप मेरी मदद करोगे? जी। ये जितनी भी टॉफीज आपके सामने पड़ी हुई है ना, इनको एक ऑर्डर में रखना है। पता है कैसे? कि छोटी टॉफीज़ को अलग करना है और बड़ी टॉफीज़ या जो बबल्स हैं उनको अलग करना है, उनके अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। तो आप उसमें मेरी मदद करोगे? जी बिल्कुल करूँगा। आपको टास्क की समझ आई है? जी। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने टास्क कर लिया है? जी। बहुत अच्छे। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे आपने टास्क कैसे किया है? जी। कैसे किया? ये सबसे पहले मैंने इनको इनके ग्रुप में रखा है। ग्रुप का कैसे पता लगा आपको? ग्रुप का इनको सेम टॉफी इनको सेम रखा है और साइज के बराबर रखा है। जो टॉफी जिस हिसाब की है और जिस साइज की है उस हिसाब से पता चला था। Piaget's concrete operational stage abilities, including classification and seriation skills, are clearly demonstrated by Hyder Ali. This practical experiment confirms that Piaget's theory remains relevant for today's children, while highlighting the importance of recognizing individual developmental patterns in education.